Dear students, myself, Rakesh, Associate Professor in Chemistry, Government Degree College. Good morning to all of you. I will be explaining to you through a series of video lectures all about carboxylic acid. I have prepared a number of video lectures for this purpose, and our video lectures will cover core syllabus, which is prescribed for university, and autonomous. Let us proceed with our first video lecture. Carboxylic acid derivatives. What are carboxylic acid derivatives? These are the compounds which are obtained by replacing OH hydroxyl part of the carboxylic acid with either this X, that is halogen, or OCOR dash dash क्यों है बच्चे, R and R dash. R is of carboxylic acid and R dash is from this group. They may be same, they may be different. So OH can be replaced by X, OCOR dash, or OR dash, or NH2. NH. Hence we get four types of acid derivatives. What are these? Acid halides. Most common are acid chlorides. I have written acid chloride. In general, we can call it as acid halide or aryl halide or CuCl. OH की जगह हमने किसको लाया बच्चे? Cl. Acid anhydride. OH की जगह किसको लाया? OCOR. Esters OH की जगह किसको लाया? OR dash. यहाँ भी आप dash लगा सकते हो. R and R dash may be same, may be different. And last one is OH replaced by NH2, and we get the. We have acid halides, we have anhydrides, we have esters, and we have amides. These are the four acid derivatives. The common feature among all, is this RCO, and this is called as acyl. हम क्या कहते हैं बच्चे? Acyl. This group is called as acyl. Next, we will study the electronic structure of acid derivative. Electronic structure acid derivative का स्टडी करने से पहले हम इसका एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं. RCO is Z. Z can be X मतलब halogen, or OCOR dash, or OR dash, or NH. We have four acid derivatives. Now, the carbonyl carbon in case of acid derivatives is sp2 hybrid. sp2 hybrid. Hence, the geometry around carbonyl carbon is trigonal plane with bond angle of around 120. Now, a carbonyl carbon has three sp2 hybrid orbitals and one unhybridized orbital. With the help of three sp2 hybrid orbitals, carbonyl carbon form bond with R. What is R? R can be H, or alkyl, or aryl. Mean it form bond either with hydrogen or with carbon of alkyl or aryl. Second, sp2 hybrid orbital is used for forming bond with Z. It can be X, it can be O, it can be O, it can be N, depending upon type of what acid derivative. And third bond it forms with oxygen.
carbonyl oxygen. These are the three sigma bonds formed by carbonyl carbon by making use of sp2 hybrid orbital. Now we have one unhybridized orbital, and with the help of it forms pi bond with carbon as per this structure. लेकिन मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों लिखा है इसको भी देखिए थोड़ा सा. पाई बॉन्ड मैंने जेड के साथ भी दिखाया. दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ acid derivatives, atom of Z attached to carbon contain lone pair. चाहे वो क्लोरीन है, चाहे ऑक्सीजन है एस्टर्स में, चाहे वो नाइट्रोजन, it contain lone pair, and because of presence of lone pair can do रहे n pi conjugation. मतलब this bond also acquires some double bond, mean the carbon oxygen bond as well as carbon Z bond has double bond factor. इसमें तो है ही ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन जेड में भी डबल बॉन्ड फैक्टर है बिकॉज ऑफ कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसे हमने बॉन्डिंग दिखाई हुई है. दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर है. अदरवाइज आप सोचेंगे कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाना था, जैसे ये बताया, इधर क्यों बनाया? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस बॉन्ड हैज आल्सो एक्वायर्ड सम डबल बॉन्ड फैक्टर. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. The next point in the series is most common reactions of these acid derivatives, that is nucleophilic acyl substitution reactions. Now, if you see acid derivatives, you will find that oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen की electronegativity carbon से ज़्यादा है. It withdraw electron from here and make this carbon electronically. Moreover, electronegativity of Z is also more than, it exert minus I effect on it. As a result, this carbonyl carbon is electrophilic in nature, and hence it get attacked by the nucleophile. When it attacks, we get nucleophilic substitution product. The most common nucleophilic substitution reactions of the carboxylic acid derivatives are hydrolysis, alcoholysis, and monolysis. Hydrolysis, water acting as nucleophile. Alcoholysis, alcohol acting as nucleophile, replacing Z, we get ester. And monolysis, ammonia acting as nucleophile. So these are the most common reactions of what? Acid derivatives. Most common. General mechanism for nucleophilic acyl substitution. General mechanism हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. So this is representation for nucleophile. Nucleophile attack the carbonyl carbon. One important point you must note is that here there is carbon. This is carbon. This is electronically deficient, as I earlier stated. It is carrying partial positive. So it get attacked by the nucleophile. Pi bond is a weak bond, and moreover oxygen is more electronegative than carbon. So this pi bond get displaced towards oxygen. We get this intermediate, tetrahedral unstable intermediate. There is steric hindrance, 4 groups attached to the carbon, and moreover oxygen is carrying negative. So oxygen tends to stabilize itself. It is carrying formal negative charge, which is making it unstable. So it tends to stabilize. In the process, what happens? There occur rearrangement of electrons. These electrons move towards carbon and Z leaves. Z is more electronegative than carbon. याद रखें बच्चे, यहाँ कार्बन एटम है. एक चीज याद रखें कि जो Z है उसमें जो एटम अटैच्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है.
चाहे कोई भी एसिड डेरिवेटिव आप ले लो, whether it is acid halide, ether, anhydride or amide. So Z is more electronegative than what? Carbon. Z atom which is attached to carbon. तो ये आगे ही यहाँ पे इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट डाले हुए हैं। जैसे ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को रीअरेंज मतलब स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा बाय मूविंग टुवर्ड्स दिस कार्बन, इट विल लीव, वी गेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Electronically rich species replaced electronically rich species, substitute electronically rich species. NuC negative, that is nucleophile, comes, and Z negative, that is another nucleophile, we can say, leaves. That is why it is nucleophilic substitution. Now, it has been explained with the help of specific example. This was journal, this is specific. We have taken methyl alcohol, alcoholysis की बात की मैंने, आप वाटर के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते। इसने यहाँ पे अटैक किया, क्यों किया? Because this carbon is electronically deficient. Displacement of pi electrons, and we get this intermediate. Rearranges tetrahedral species बनाइए, आपको पता है, और ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, इट इज अनस्टेबल, सो इट रीअरेंजेस टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये मूव करेगा टुवर्ड्स कार्बन, एंड क्लोरीन विल लीव इन द माइनस Cl नेगेटिव, यहां से निकल, we get this, rest it will lose H positive, and we will get the other as final product. Final product हमें क्या मिलेगा बच्चे? एस्टर। Let us see in the next slide. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी बात की ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर्स एंड एमाइड्स, द लीविंग ग्रुप और Cl नेगेटिव। नेगेटिव बच्चे यहाँ पे रखना है, पीपीटी में ये आ गया है, Cl नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, RO नेगेटिव एंड NH2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, दीज आर द लीविंग ग्रुप्स। तो आपको पता होगा कि Cl नेगेटिव इज ए वीक बेस। और आपने लोरी ब्रोंस्टेड कांसेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ा होगा, जैसे HCl ये बना है ना, ये Cl नेगेटिव। HCl is a strong acid. Strong acid has a weak conjugate base. Strong acid possesses or gives a weak conjugate base. और आपने लोरी ब्रोंस्टेड कांसेप्ट ऑफ एसिड बेस पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? वीक। HCl is a very strong acid, its conjugate base is very weak. Cl negative is a weak base. RCOO negative is a moderately strong base, क्योंकि RCOOH is a weak acid, इतना strong acid नहीं होता। It is a इसका जो conjugate base होगा वो moderately क्या होगा? Strong. RO negative is a strong base because alcohols are weak acids, even weaker than water. And NH2 negative is the strongest base. The reason is अमोनिया से बना है ये, अमोनिया itself बेस माना जाता। तो अगर उसने NH2 नेगेटिव दिया है एसिड बन के, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि NH3 is a very very weak acid, it means its base conjugate base will be very very strong. कंजुगेट एसिड बेस पेयर के कांसेप्ट को अगर आप याद रखिए तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि Cl नेगेटिव is a very weak base and NH2 negative is a very strong base, strongest base in fact. In other words, Cl negative is a very good leaving, is a weak base and hence good leaving, while NH2 negative is a bad leaving. NH2 negative आसानी से नहीं निकलेगा बच्चे, जबकि Cl आसानी से निकलेगा। तो फिर मोस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? इसके बेसिस पे अगर आप देखें, RCOCl will be the most reactive and RCONH2 will be the least reactive. अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बच्चे याद रखें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा RCOCl. RCOCl will be the most reactive and RCONH2 will be the least reactive, less reactive। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है ये
रिएक्टिव, लेस, मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एसिड हैलाइड्स और एमाइड सबसे कम। द ऑर्डर हैज बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसके बेसिस पे डिसाइड किया हमने? एबिलिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप टू डिपार्ट। इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया एक्टिविटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर एमाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, अंडरस्टूड है। जो लेस रिएक्टिव है वो मोर स्टेबल है। सो अमाइड्स आर मोस्ट स्टेबल, then esters, then anhydrides, and then chlorides. Chlorides or ester chlorides are least, क्या बचे? Least stable. This is the stability order. This is most important. Now next, order of reactivity, जिसकी हमने अभी बात की, इसको हम डिटेल में अब हम एक्सप्लेन करेंगे। The order of reactivity can be explained partly on the basis of Arrhenius structure of acid derivative and partly on the ability of leaving group to depart. हमने डिस्कस भी किया। दो तरीकों से हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। वन इज रायोनेंस एंड सेकंड इज एबिलिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप टू डिपॉट। पहले देखते हैं बच्चे रायोनेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, जो जेड है इसका जो एटम अटैच्ड है टू द कार्बोनाइल कार्बन, जेड कैन बी हैलोजन, जेड कैन बी OCO, OCOR in case of anhydride, or Z can be OR dash in case of ester, or it can be NH. So the atom attached of the Z to the carbonyl carbon in all cases contain lone pair, all cases, and hence there is N-pi conjugation, and hence there is rayonance. पहला उसने रायोनेंस स्ट्रक्चर लिखा बच्चे ये कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है and hence it will tend to withdraw electron towards itself and we get this rayonance structure. Carbon positive and oxygen, because lone pair is in conjugation with the positive charge, so it will tend to stabilize the positive charge. Lone pair of what? Z. Z mean chlorine, oxygen, oxygen और nitrogen, याद रखें बच्चे। तो ये इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। We get another rayonance structure. Of all the rayonance structure third is very important. Why? Because it causes the dispersal of charge. इसमें देखिए चार्जेस पास पास है, ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। जितने चार्जेस ज्यादा दूर हो, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज जितना ज्यादा हो, स्ट्रक्चर उतना क्या बच्चे स्टेबल ज्यादा होता है। This structure is making less contribution. This structure is making more contribution because there is more dispersal of charge. Structure 3 is important. Of all these structures, structure 3 is important. मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं चारों डेरिवेटिव्स के लिए पहले बता देता हूँ। मैं 3 स्ट्रक्चर को लिखूंगा, फिर बताने की कोशिश करूंगा कि 3 स्ट्रक्चर किसका ज्यादा स्टेबल, एमाइड का ज्यादा स्टेबल है या हैलाइड का या एनहाइड्राइड का या एस्टर का। जिसमें ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। मोर स्टेबल मीन मोर कंट्रीब्यूशन, वो पेरेंट कंपाउंड को स्टेबलाइज करेगा। So that parent compound will be more stable. More the stability of structure third in a given acid derivative mean more stable the parent compound, जिससे वो रायोनेंस स्ट्रक्चर बना है। हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर अमाइड में सबसे ज्यादा स्टेबल है। इट मीन अमाइड्स आर मोस्ट स्टेबल। लेट अस एक्सप्लेन। हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये बच्चे मैंने लिखे, थर्ड को मैंने अब विद स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स लिख दिया। दिस इज विद अमाइड, थर्ड को ही लिखा है बच्चे। जेड की जगह मैं NH2 ले आया हूं, ये स्ट्रक्चर लिखा। एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स और को नाम दे दिए 3A, 3B, 3C एंड 3। अगर आप देखें इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इन 3 स्ट्रक्चर को देखें, इसको छोड़ दें बच्चे, लेट अस लीव। इसको क्यों छोड़ रहा मैं, क्योंकि जो हैलोजन है, क्लोरीन जिसकी हम बात कर रहे, इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है
रायोनेंट्स में वो 3p है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इन सब में 2p है, जिसने रायोनेंट्स की है, ये पाई बॉन्ड बना है। तो लेट अस टॉक ऑफ 3a 3b एंड 3c। इसमें अगर देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। इट मीन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इजिली कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स राइट। इन दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट एज कंपेयर टू 3b एंड 3c। इतना तो क्लियर हो गया। Extent of contribution of structure third towards Rayonier's hybrid depend upon electronegativity of the atom directly attached with the carbonyl carbon. As oxygen is more electronegative than nitrogen, therefore contribution of structure third A is significant in the case of amides than 3b and 3. 3a की contribution ज्यादा है as compared to 3b and इतना तो पता चल गया हमें कि amides are more stable than esters as well as anhydrides. अब हम देखते हैं 3b और 3c का आपस में कंपैरिजन, इनका कंपटीशन। इसमें अगर आप देखें दोनों में, तो जो 3c है इसमें ये जो आपका OCOR ये COR ग्रुप है, इट इज एक्सर्टिंग माइनस आई इफेक्ट ऑन ऑलरेडी पॉजिटिव ऑक्सीजन, माइनस आई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें प्लस आई, इट मीन 3c इज लेस स्टेबल, 3b इज मोर स्टेबल। माइनस आई इफेक्ट इसको लेस स्टेबल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को इनहांस कर रहा है, मोर द चार्ज लेस द स्टेबिलिटी। 3c is less stable, 3b is more stable. Mean esters are more stable than what anhydrides. मैंने पहले कहा कि राइनो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मीन पेरेंट कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल। Esters are more stable than what anhydrides. इतना पता चल गया कि amides are more stable than what esters, esters are more stable than what anhydrides. तीन का पता चल गया। अब बात करते हैं किसकी, एस्टर क्लोराइड। एस्टर क्लोराइड कहता है लीस्ट स्टेबल है। उसका रीजन क्या दे रहा है? उसका रीजन है कि 3p ऑर्बिटल रायोनेट्स कर रहा है 2p से। 3p 2p, कार्बन का 2p है, 2p has a small size, 3p has a large size, so there is no effective rayon, effective overlap नहीं होगा effective rayonance, due to which the contribution of 3d towards the rayonance is least. This structure is least stable. यहाँ पे लिखा होगा देखिए बच्चे, the contribution of structure 3d towards the rayonance is lowest because lone pair is present in orbital of different size, that is 3. Therefore, overlap is poor and contribution towards the hybrid of acid chloride is much lower. आपको पता चल गया on the basis of rayon structure, amides are most stable and acid chlorides are least stable. Next, मैंने आपको जैसे बताया कि सेकंड बे, ये हमने क्लियर कर दिया आपको कि मोस्ट स्टेबल कौन है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बच्चे? रिएक्टिविटी ऑर्डर विल बी रिवर्स ऑफ व्हाट स्टेबिलिटी ऑर्डर, दैट इज एस्टर क्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड एमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है, प्रीवियस पेज पे था वो स्टेबिलिटी ऑर्डर था। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, एबिलिटी ऑफ द लीविंग ग्रुप टू डिवॉल्व, बेटर द लीविंग ग्रुप मोर द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड। ये तो पक्का है बच्चे, बेटर द लीविंग ग्रुप, जितनी आसानी से लीविंग ग्रुप कौन है? ये जेड, यानी कि Cl, ये ग्रुप, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जिसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया, दिस वन, बेटर द लीविंग ग्रुप मोर द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव। लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप डिपेंड अपॉन देयर रिलेटिव बेसिटी, देयर रिलेटिव बेसिटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, में पहले बता चुका हूं आपको। जैसे HCl से बना है Cl नेगेटिव, strong acid gives weak conjugate base. HCl is a very strong acid, its conjugate base is very weak. NH2 नेगेटिव किससे बना है बच्चे? अमोनिया से। अमोनिया को हम बेस कहते हैं। मीन अगर इसने एसिड का काम किया है, मीन इट इज ए वेरी वेरी वीक एसिड। तो वेरी वेरी वीक एसिड हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। NH2 नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, Cl नेगेटिव इज द वीकेस्ट बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इज ए पोर लिविंग ग्रुप, याद रखना बच्चे। स्ट्रॉन्ग बेस इज ए पोर लिविंग, एंड हेंस आपको पता चल गया कि चूंकि NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये पोर लिविंग ग्रुप है, मीन अमाइड्स आर मोस्ट स्टेबल, अमाइड सबसे ज्यादा स्टेबल एंड एस्टर क्लोराइड्स आर लीस्ट स्टेबल। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चे? रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर इज एस्टर क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इस पॉइंट को याद रखना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एसिड क्लोराइड, दूसरे नंबर पे कौन है एनहाइड्राइड, तीसरे नंबर पे एस्टर, और लास्ट में कौन है अमाइड्स। अमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव, एसिड क्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर कन्वर्शंस, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे अब हम इंटर कन्वर्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि एसिड क्लोराइड आपके मोस्ट रिएक्टिव है, एसिड क्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, इसका आपको पता चल गया। एसिड क्लोराइड्स को हम एनहाइड्राइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एस्टर्स में भी कर सकते हैं, और फिर इसमें बच्चे अमाइड्स में भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसकी, एनहाइड्राइड्स की, एनहाइड्राइड्स को हम एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू एस्टर्स एंड अमाइड्स। इसी तरह से एस्टर्स की बात करें, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अमाइड्स बट नॉट बैक। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, एसिड क्लोराइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्राइड, एस्टर्स एंड अमाइड्स। एनहाइड्राइड वापस नहीं जाएंगे क्योंकि एनहाइड्राइड्स आर लेस रिएक्टिव देन क्लोराइड्स, but they can be converted into esters and amides which are more stable than anhydrides। फिर हम बात करते हैं esters की, esters वापस नहीं जाएंगे, मतलब they cannot be converted into ester chloride and anhydride, but they can be converted into amide। These are the interconversions, यानी कि क्लोराइड्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें बच्चे, कैसे कर सकते वो भी दिया है। जैसे हमने क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करना किसमें, एनहाइड्राइड में, तो हमने किससे ट्रीट किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से। ये हम पढ़ेंगे भी रिएक्शन। इंटरकन्वर्शंस हम प्रेपरेशन जब करेंगे इन डेरिवेटिव्स की, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है कि किसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मोर रिएक्टिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस रिएक्टिव। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी डिसाइडेड which derivative can be converted into other derivative। Thank you, thank you very much। In case of any difficulty you can contact me on my mobile number। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन everything to you।